अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स और ट्रैवलॉगर सिंथिया रिची के दरमियान लफ्जी जंग ट्विटर पे जारी थी, लेकिन इस जंग में मजीद शिद्दत आई है 2 रोज पहले जब सिंथिया रिची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप पर हरासा करने के इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक ने उनके साथ ज्यादती की थी 2011 में, और इसके अलावा साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और साबिक वजीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन ने उनको हरासा किया था, मैन हैंडलिंग की थी उनके साथ। इन तमाम इल्जामात की तरदीद की है यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी, मखदूम शहाबुद्दीन और रहमान मलिक साहब ने भी। और कल हमारे प्रोग्राम में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे मौजूद थे। अली हैदर ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि तमाम इल्जामात गलत हैं और ये इल्जामात इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग सिंथिया रिची के खिलाफ FIA में कंप्लेन लेकर गए हैं जब उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर के हवाले से डेफेमेटरी ट्वीट किया था। इसका रद्द-ए-अमल है कि इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी पर इल्ज़ाम लगा रही है सिंथिया रिची, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंथिया रिची। सिंथिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सिंथिया, आपने अपने एक रीसेंट वीडियो में साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक पर ज्यादती का इल्जाम लगाया था और आपने यूसुफ रजा गिलानी जो कि साबिक वजीर आजम है और साबिक वजीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन पर मैन हैंडलिंग का इल्जाम लगाया है। इन तमाम लोगों ने सख्ती से तरदीद की है इन इल्जामात की, बल्कि जो फैमिली है यूसुफ रजा गिलानी की, उन्होंने कहा है कि वो आपके खिलाफ केस फाइल करेंगे। क्या आप अब भी अपने इन इल्जामात पर डटी हुई हैं? Absolutely. बिल्कुल ठीक। ओके, एंड इन माय प्रोग्राम कल मेरे प्रोग्राम पर अली हैदर गिलानी जो कि साहबजादे हैं यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम के, उन्होंने कहा कि हम आपको कोर्ट लेके जाएंगे और कोर्ट में आपको सबूत पेश करना होंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? I am ready to face and respond to any and all allegations as well as my own. Okay, you are ready to respond all the allegations. If you are comfortable और इस वाक़ये की कुछ तफसीलात बताना चाहें कि ये वाक़या कब, कहां और कैसे पेश आया? Under what circumstances it took place? Well, first of all, I want to say that there was reports in Independent Urdu that has recently been corrected that I believe stated that former Federal Health Minister Makhdoom Shahabuddin had on multiple occasions given me back massages, which was not the case. That was an inaccurate statement, and I contacted the reporter for her to correct the statement, which I believe she has now done. I have always maintained a friendly, cordial relation when the Health Ministry, when PPP invited me and facilitated me originally in 2010 to work with them in Pakistan. There was one incident where former Minister Makhdoom Shahabuddin tried to give me a shoulder massage, and it proceeded a bit further out of the blue, and it was unexpected, and I asked him to stay away. That's the end of that story. Right. The statement by former Prime Minister Gilani is when he said, I believe, that he only met me one time at a diplomatic reception. That is simply not true. I met him at the presidency not long after he was ousted as Prime Minister. And this was at the facilitation of a couple of Pakistani Americans, as well as another individual who was in the room with me at the time. Now, I have been in and out of Pakistan for the better part of 10 years. And what I say specifically when it comes to the Prime Minister, the former Prime Minister, as well as the Interior Minister, I know as well as you that there are logbooks, and the agencies can very easily go back and refer to when individuals go in and out of places like the presidency. And very simply, when I met the former Prime Minister with 4 other Pakistani men in the room, we discussed a number of topics, and when we went to say goodbye, he gave me a hug where his arms grazed against the sides of my breast. And I pulled away and looked at every other person in the room to see what the reaction was, and all the other men looked down as if it never took place. Now, when it comes to... And you think क्या आपको लगा वो टच जानबूझकर उन्होंने किया था?
I believe it was, yes. It was an inappropriate hug. I had just met him for the first time. That was at the president's house, and I subsequently saw him at diplomatic receptions, and I was polite to him. And I believe afterwards I had met his son, and at the time when I met him, I had not put two and two together. It's an expression we say. I didn't realize that he was the former prime minister's son at the very instant that he introduced himself. Further, when I realized that it was his father who made the inappropriate gesture, not his son. So why would I say anything rude or be rude to the son who had done nothing wrong to me? And it was at a diplomatic reception where I met his son, and that was neither the time nor the place to discuss such an issue. And this was a recent meeting you're talking about. Well, when I met the Prime Minister's son, it would have been more recently, I think a couple of years ago, if I remember correctly. I don't remember the exact date. I vaguely remember meeting him, and when I first was introduced to him, I did not realize that it was Yusuf Gilani's son that I was actually talking to initially. And right. Then towards the middle part of the conversation, I realized it was, and I was very polite to him as he was to me, and that's simply that. Right. And what about the incident? और रहमान मलिक के साथ क्या वाकया पेश आया था? Yes. This was around the time of the Osama bin Laden incident, and the Interior Minister, whom I had direct contact with, oversaw my work visa directly, and as a new person to Pakistan, I had no idea when he said, Cynthia, we need to talk about your visa. There are issues between U.S. and Pakistan relations. I need for you to come visit me. Now, I had a number of friends that had told me in the past for completely unrelated issues that most businesses handled it after hours or at people's homes, at cocktails or receptions or whatever the case is, that meeting in offices is just a formality. And I had met at Interior Minister's Rahman Malik's office a handful of times regarding my visa. So when U.S.-Pakistan relations became a problem, and he messaged me and said, I need to speak with you about your visa, I will send my driver to come pick you. He will bring you to the minister's enclave. I had no way of knowing if it was an official capacity residence. He was always surrounded by a team. I assumed the same would be the case. Right. And when I arrived, what I found, his driver picked me up in a blacked out Toyota Land Cruiser, I believe. It was an SUV, or what we call an SUV, or a large Jeep. And when he dropped me off, I walked into the residence, and I was very surprised to see a large bouquet of flowers. I was later told that he had a gift for me, which was boxed, a Samsung tablet of some sort, and I was given a couple of drinks. And about maybe a drink and a half, I started to feel dizzy and unwell, and he said that perhaps I should lie down, and the next thing I know, I'm on a bed, and he is on top of me. Okay, and then you Would you like for me to go into more detail? No, that's perfectly all right. And then you said you were. और उन्होंने आपके साथ ज्यादती की और आपने कल इंडिपेंडेंट उर्दू को एक इंटरव्यू भी दिया है, तो आप बताइएगा कि ये बात सही है या गलत। आपने बताया कि आपको नशावर चीज दी गई थी और इसके बाद आप अपने सेंसेस में नहीं थी, और जब उन्होंने आपके साथ ज्यादती की तो इसके बाद उन्होंने आपको 2000 पाउंड दिए। क्या आपने ये कहा है और वो पैसे किस लिए दिए गए थे? And what was it all about? What I remember, so I spoke to the author to help clarify these things, because I believe, and she should have recorrected some things in the article. What I remember, because I was very dizzy, and I remember Rahman Malik being on top of me and being in and out of consciousness, and I remember him saying, "Don't worry, I won't spill inside of you." Those were his exact words verbatim. And then after the act took place, his driver, or whomever it was, the same gentleman that came and picked me up,
helped me get dressed. Ramon Malik said that I needed to sever ties with the NGO that I was working with, Humanity Hope, who was being run by Farhana Swati, who is the daughter of the former former Minister of Science and Technology, Mohammed Azam Khan Swati. Right. Federal Minister Ramon Malik said for me to sever ties with this INGO because Minister Swati was being investigated by the U.S. government for tax evasion, and I would have difficulties with my income. So we handed some cash to the driver. I remember him handing, he said, here's 2,000 pounds. Here is a Samsung tablet, and all of the stuff was taken to the vehicle, and I was escorted out to my vehicle with the driver and another person. And the entire time I was dizzy and barely able to walk on my feet. Right. So he handed over the money to the driver who had come. तो उन्होंने वो 2,000 पाउंड आपके ड्राइवर को दिए थे जो आपको पिक करने आया था। सिंथिया, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हरासमेंट के केसेस पर विक्टिम या एलिजेड विक्टिम, ये उसका हक है कि वो कब बात करना चाहे और वो किस तरीके से बात करना चाहे किसी भी वाकये के बारे में। लेकिन फिर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि इस बारे में आपने पहले बात क्यों नहीं की, 9 साल पहले इन इल्जामात का जिक्र क्यों नहीं किया। क्या आप शेयर करना चाहेंगी कि उस वक्त वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से आप बात नहीं कर पाई, और आप क्योंकि एक एम्पावर्ड खातून है, आपके पास आवाज भी थी, आप अमरीकी शहरी भी हैं, फिर भी आपने उस वक्त चुप रहना जरूरी समझा। वो क्या सर्कमस्टांसेस थे उस वक्त? Frankly, I was afraid. I was alone. Minister Malik made it seem as if he was the only friend that I have. He was the most powerful man in the country at the time. He said that he would help me get an additional job. These are all things that he had said beforehand, before the rape took place, that he was there to help me. And his English was not very good at that time, but these are the things that I remember him communicating to me. Again, I was alone. I was being hosted by PPP. Who would believe me if I had reported the incident to the local police? Who would believe me? Who would I report this to? The most powerful man in the country, run by the same government. You tell me, what would a woman like me, what would any woman do in my circumstance? And I later did tell someone at the U.S. Embassy that I invited several days later to attend an event with me because I wanted to speak with him privately and get his feedback. And his response, his response was less than supportive. It was less than adequate. He said, right now, U.S.-Pakistan relations are on a roller coaster right now. Give it some time, and I'll try to introduce you to someone else. What they did was absolute lack of follow-up at that point in time. So I did speak to someone at the U.S. Embassy who was a U.S. Embassy employee, but outside of the embassy. Whether or not they filed something or documented something in their computer systems is beyond me, but I am following up with the U.S. Embassy now. Right, but our correspondent yesterday, he wrote to the embassy, U.S. Embassy in Pakistan. हमारे रिपोर्टर ने U.S. Embassy से सवाल किया था और इस पर U.S. Embassy का जवाब भी आया है। U.S. Embassy ने कहा है कि हम तमाम अमेरिकी शहरियों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि जो प्राइवेट मैटर्स होते हैं उसको मद्देनजर रखा जाता है और उनकी डिटेल्स शेयर नहीं की जाती। आप कह रही हैं कि आपको सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन U.S. Embassy का ये जवाब है कि वो हर अमेरिकी शहरी को सपोर्ट करते हैं। All American citizens, but you are saying when you told them nobody supported you from the U.S. Embassy. I got less than adequate, appropriate response. I was offered to fly out. I was offered to make arrangements to go home. And again, this was outside of the embassy. This was with an American who I had attended a few events with, and I had asked for his advice on how to handle this particular matter, and he said we can help facilitate you getting home, and that was about it. And I specifically requested for him to connect me with someone else. Right. And do you have all this document? क्या US Embassy के साथ होने वाली तमाम बातचीत रिकॉर्डेड है? क्या उसका एविडेंस आपके पास मौजूद है? I'm not in the habit of recording conversations with my fellow Americans. I usually trust what my fellow Americans will do.
No, what I meant is, did you email them? Was there something in writing? No. Okay. So we were in communication, and this particular individual and I were in email communication, and I had asked him if he had followed up on the matter at hand. So that was communicated. Not long after this event, a few months later, I had to go back home to the States to attend to personal family matters, and my laptop was stolen, and I found some of my files and some of the things that I kept on my hard drive wiped. So I had some of my information, not only some of my personal property stolen, just my laptop, not my jewelry or anything else, but I had my laptop stolen from my computer from the Islamabad airport. And when I received my baggage a few weeks later, I found it had been rerouted through Italy. And when I opened my bag, everything was in place, including my laptop cover, but my laptop was gone, and much of the data that I had on my laptop was missing as well. Right. So you didn't press charges because आपने चार्जेस नहीं प्रेस किए क्योंकि आप समझती थी कि रहमान मलिक बहुत ताकतवर है. आपने इस बात को पब्लिक नहीं किया, वो आपका हक था. तो क्या किसी और को आपने इस बारे में बताया? क्योंकि हैरेसमेंट के केसेस में अगर उस वक्त भी आपने किसी को ये बताया हो जब ये वाकया हुआ था, तो वो भी बतौर एविडेंस कंसिडर किया जाता है. केसेस ऑफ हैरेसमेंट. I understand that, and believe me, I have worked with victims before. I have also worked with individuals who have pretended to be victims before, and I understand the gravity of such accusations. I take it very seriously, the claims as well as the claimants. But the fact of the matter is that back then, almost 10 years ago, I did not have the voice that I have now. Why am I speaking out now? I have a number of contacts on PPP, PMLN, JUI, ANP, PTI, etc. Over the past 2 years, I have been investigating the PTM, the Pashtun Tahafuz movement, and I have discovered connections between PTM and PPP. Some of these connections I have posted on my social media. Now, because of this, I started receiving harassment because Mansour Pashtun specifically said he welcomed people looking into their human rights claims, of which was of great concern to anyone anywhere. And I began doing so with the appropriate clearances from the authorities because I found it a matter of great human interest. Now, when I started posting and sharing some of my findings, I started receiving harassment from people, accounts identifying as PTM, including Galila Ismail. Cynthia, I'll come back to that. इस पर हम मजीद बात भी करेंगे क्योंकि कल हमारे प्रोग्राम में यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे अली हैदर गिलानी ने ये कहा था कि क्योंकि उनकी फैमिली सिंथिया रिची के खिलाफ अदालत में गई है, उन्होंने कंप्लेन फाइल की है, ये उसका रद्द अमल है. जो भी वो इल्जाम लगा रही हैं, ये उस कंप्लेन का रद्द अमल है. इस पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाजरीन. हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं सिंथिया रिची के इल्जामात के हवाले से. उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप पर ज्यादती के और मैन हैंडलिंग के इल्जामात लगाए हैं. आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है सिंथिया रिची. सिंथिया, यस्टरडे इन आवर प्रोग्राम अली हैदर गिलानी. सिंथिया, कल हमारे प्रोग्राम में अली हैदर गिलानी ने और इससे पहले साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि आपने उनके ऊपर मैन हैंडलिंग का इल्जाम इसलिए लगाया है क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी के एक और बेटे कासिम गिलानी ने आपके खिलाफ FIA में कंप्लेन दायर की है, इसीलिए आपने उन पर यह इल्जाम लगाया है. You're accusing Yusuf Raza Gilani for manhandling you. Not at all. In fact, I don't even remember reading anything about him. And even if I had, that's not who I am as a person. And I think I recall reading that Prime Minister Gilani denied even meeting me but one time at a diplomatic reception. Any of the intelligence agencies or anyone in the authorities can look in the logbooks and see that I was at the presidency's house at a particular time several years ago, not long after Prime Minister Gilani was ousted as Prime Minister. Those logbooks are kept as records. That's fine, Cynthia, but are you accusing Yusuf Raza Gilani? क्या आप इसलिए इल्जाम लगा रही हैं क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ FIA में कंप्लेन दर्ज की हुई है और उस कंप्लेन के ऊपर आपने अपना जवाब भी जमा करवा दिया? After those complaints were filed with the FIA. Absolutely not. I have nothing to gain from this. I have nothing. Look, I have been manhandled by a number of men. This is from men across the country.
Okay, but I have only been raped by one person. I have been assaulted by a couple of other men, of which I will tell later. I was writing my memoirs on this. I have no interest. I don't gain anything from this. I have, however, been harassed by PPP for the past couple of years, and I have tried to use my contacts privately to ask them to please quit harassing me online. And when they finally started targeting my sisters and created a fake account and tried to trick them into thinking that we had a long-lost sister from my deceased father's previous marriage, my sisters, who are very naive and who are nice to everyone that they meet, actually disclosed a lot of deeply personal family information, which was later leaked on Twitter, and I was tagged by it by PPP accounts, and I had to report them to Twitter. So it's become personal. I've been dealing with this for months now from PPP and PTM. It's not just recent, and I tried to handle it politely. I didn't go to FIA before because the last time I went to FIA, when I was harassed by this Farhan Burt guy, they did absolutely nothing. Absolutely nothing. So I am at my wit's end. I am being harassed. I have been sent death threats. I have been sent rape threats by the so-called greatest Democratic Party in the country. Give me a break. If this is happening, obviously this cannot be defended. It should be condemned. And अगर ऐसा हो रहा है तो वो यकीनन गलत है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए. लेकिन इसका एक मुकम्मल बैकग्राउंड है. ये जो ट्विटर पे लफ्जी जंग आपके और पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स के दरमियान पिछले 7-8 दिनों से जारी है, उनका ये इल्ज़ाम है कि ये जंग आपकी वजह से शुरू हुई. आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर सीरियस किस्म के इल्ज़ामात लगाए. आपने उनको बदनाम करने की कोशिश की, उनके बारे में तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से पार्टी के फॉलोअर्स में बहुत गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं. तो ये इस तरीके से शुरू हुआ. आप उन पर इल्ज़ाम लगाती रही और वो आपके बारे में इल्ज़ाम लगाते रहे. When it started, and obviously consequences were that they were accusing you, and as you said, they were harassing you as well. No, this is not when it started. This is a smokescreen that PPP is using because they know I was getting closer to discovering their connections with PTM. What I actually said in the Twitter, and I come from the South in the United States where it's considered very disrespectful to speak ill of the dead. If you read my tweet and my clarifying tweet, what I said was, this echoes stories. I was horrified to see this video of this woman encouraging the rape of this young girl by her guards. And because I had been sexually assaulted, because I had been raped in this country, I immediately was triggered by that. And I responded, this echoes stories that I have been told of what another woman had done from Benazir Bhutto. But this was told to me by senior leaders, senior PPP sitting ministers at the time. And they seem to do so almost in a perverse manner. This has got to stop. This male harassment, this subjugation of the women, and more importantly, women, this power play is a pattern in Pakistan, and we cannot stop. Are you saying आप ये कह रही हैं कि जो कुछ आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में लिखा, वो मालूमात आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ने दी थी? Yes, and it's almost as if they relished in it. It was a very perverse thing. I felt sickened by that. My tweet was in no way intended to defame a deceased woman. There were some things about Benazir Bhutto that I very much admired. There were some things that I did admire. And in fact, I made a statement in my FIA report that at one point I actually wanted to interview Bilal because I felt like that he might have the potential of being a future leader of Pakistan because I found him to be a bit different. And people in People's Party have known, including the Interior Minister Rahman Malik. I made a specific request a while back to please introduce me to Bilal because I would like to have a sit-down conversation with him of what he promised to do. 2 or 3 others did. So this has nothing to do. It's not a vendetta against anyone, but justice must be served. If I am found to be telling a lie, then I will meet my punishment. I will face my punishment. I am not going anywhere. But I will not stand for this proxy BS that PPP uses to intimidate and subjugate. And let me tell you one more thing. The rape threats, the death threats that I have received from the men have been horrendous. But the words of encouragement that because PPP leaked my numbers and my personal information online,
But the number of women that have privately messaged me because they're sick of the Zardari's PPP has been all equally overwhelming. It is the Zardari's filthy PPP that has... सिंथिया, मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा। ये बताइएगा कि आपने अपने FIA को स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा कि ये तमाम तर मालूमात आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने प्रोवाइड की, बल्कि आपने ये कहा वर्क विद द अथॉरिटीज टू शो द एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव दैट योर ट्वीट वाज नॉट फॉल्स and therefore it was not defamatory. So you are saying you have आप कह रही हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है जो आप कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगी। I will do whatever is necessary to prove everything that I have said has been accurate, and I will work with authorities to the best of my ability. No, couple of more last questions because एक दो और सवाल मैं करना चाहूँगा क्योंकि जब से ये इल्ज़ामात सामने आए हैं इससे और सवालात भी खड़े हुए हैं और पीपल्स पार्टी ने इन सवालात को अपनी कंप्लेंट में भी उठाया है। मिसाल के तौर पे उन्होंने पूछा है कि सिंथिया रिची किस वीज़े पर पिछले 10 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है बतौर ट्रैवलॉगर। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से ट्रैवलॉगर्स आए जो कि चले जाते हैं, लेकिन आप मुसलसल पाकिस्तान में 10 साल से काम कर रही हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगी कि पाकिस्तान में आप किस वीजा पर काम कर रही हैं? It's none of their business. The authorities and the appropriate authorities know what I'm working on. I am responsible to the government as a resident here. I am a law-abiding resident in this story. Right. Today, People's Party leader Saeed Ghani, he said that obviously all your claims. आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर सईद गनी ने भी इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि आपका किरदार मशकूक है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप किसी के एजेंडा पर काम कर रही हैं और ये इल्ज़ामात भी उसी एजेंडा का हिस्सा है। आप सियासी पार्टीज़ को मलाइन और बदनाम करती आई हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि ये इल्ज़ामात उसी एजेंडा का तसलसल है ऑफ एक्यूजिंग एंड डिफेमिंग द पॉलिटिकल पार्टीज़। My agenda is the truth, and I would expect someone like him to say something like that. The truth will come out in court, and in the court of public opinion. Of that, I have utmost faith. Right, but when I saw your timeline, obviously when I was researching, and लेकिन मैं भी आपकी टाइमलाइन देख रहा था और आप क्लेम करती हैं कि आप ट्रैवलर हैं, ट्रैवल लॉगर हैं और आप पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाती हैं, लेकिन आपकी टाइमलाइन तो इल्ज़ामात से भरी पड़ी हुई है। आपने सियासी पार्टीज़ को, सियासतदानों को, सिविल सोसाइटी पर बेशुमार इल्ज़ामात लगाए हैं। ये इल्ज़ामात सियासी क्रिटिसिज्म की सूरत में भी हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, हरासमेंट और रेप के इल्ज़ामात हैं और यहाँ तक कि आपने लोगों को ट्रेटर भी कहा है। आपने सियासी पार्टीज़ को एंटी स्टेट पार्टी भी कहा है अपनी टाइमलाइन पर। तो ये सब पढ़कर ऐसा तो नहीं लगता कि आप पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना चाहती हैं, क्योंकि आप किसी एक पार्टी को नहीं बल्कि काफ़ी सारी पार्टीज़ को टारगेट कर रही हैं। आप पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, PTM को ख़ास तौर पर टारगेट करती रही हैं। Yes, I wanted to show the positive parts of Pakistan, but I also wanted to be objective. There's just as much bad things happening here as there are good things, just like in the United States. And tell me, how many Pakistanis live in the United States? And how many of those Pakistanis are very vocal in politics and express their opinion? Why should I be treated any differently? हाँ, लेकिन आपकी ज़्यादातर टाइमलाइन इल्ज़ामात से भरी पड़ी है। आपने जो स्टेटमेंट FIA को दिया है उसमें भी आपने इल्ज़ामात लगाए हैं। जैसे मैंने कहा, आप क्लेम करती हैं कि आप एक ट्रैवल लॉगर हैं, लेकिन अपनी स्टेटमेंट में आपने ये कहा है कि आप पिछले 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और आपकी इन्वेस्टिगेशन इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTM दोनों एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। और साथ में आप ये भी कह रही हैं कि तमाम कार्रवाई जो आपने की है, इन्वेस्टिगेशन जो आपने की है, इसमें आपको स्टेट एजेंसीज ने सपोर्ट किया है। तो जब आप कहती हैं कि आपकी टीम इस नतीजे पे पहुंची है कि पीपल्स पार्टी एंटी स्टेट पार्टी है, तो उसमें आप अपने आप को अलाइन कर रही हैं स्टेट एजेंसीज के साथ कि उनके साथ मिलकर आपने ये तहकीकात की है। I am a freelancer. I do a variety of work. I was labeled an agent when I was doing positive work for Pakistan. And now I'm being labeled another agent because I'm showing a different side of Pakistan. Pakistan, as you know, is like a multi-layered onion. There is not everything is perfect here, just like in America or any other place. But if I find something that is interesting, and I have worked in politics most of my life, also, that's a big part of my background in the United States.
So when I see something that emerges as a human interest story, I wanted to do a story that was different from the more positive things that I was trying to do. And when I started looking into this human rights accusations, I found some things to be accurate, but I found a lot of things that were not accurate. And when I started getting harassed by PTM and PPP, that's when I started deciding, okay, let's see if there's going to be an alignment. Otherwise, why would PPP, who claims to be the most democratic, forward-thinking party in Pakistan, be harassing me, and why would they target my family? Well, it's one thing to call me names. It's one thing to call me Jasus. It's one thing to say a Tazish about me. But when you start targeting my family and my deeply personal family information starts getting leaked, that's where I draw the line. And this happened several weeks ago. And I privately asked a number of members in the PPP to please ask their lower tier members to stop harassing my sisters, to stop harassing my family on social media. They can harass me all they want to, but this is where I draw Obviously, the line. if this is happening, it should stop. But thank you very much for your time, Cynthia Ritchie. Thank you very much for joining us. Cynthia Ritchie आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी और हमने उनको बताया कि जिन जिन पर आपने इल्ज़ामात लगाए थे, उन्होंने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है, लेकिन वो कहती हैं कि वो अपने इल्ज़ामात पर डटी हुई हैं और उनको साबित करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने तो इल्ज़ाम लगाए हैं, लेकिन उनके इल्ज़ामात की जो तरदीद आई है उस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले सिंथिया रिची हमारे प्रोग्राम में बता रही थी कि जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं वो उनको साबित करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इन इल्ज़ामात की तरदीद कल आ चुकी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी बताया कि मैं उनसे पहले नहीं मिला जब मैं वज़ीर आज़म था, या उसके बाद शायद उनकी मुलाकात चंद महीने पहले उनसे किसी इवेंट पर हुई थी। हमारे ही प्रोग्राम में कल उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी ने यह भी कहा था कि हम भी चाहते हैं कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात हो, और जब तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक सिंथिया रिची का नाम ECL पर डाल देना चाहिए। 9 साल तक खामोश रहना, ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और हम भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उनको फिलहाल ECL पे उनका नाम रख दिया जाए, और जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक बहुत सीरियस एलिगेशन हैं हरासमेंट के, और हम हरासमेंट को हमारी लीडरशिप और हमारी जो मेरे वालिद साहब हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो हमेशा इन हरासमेंट के इशूज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। हो या उनके वालिद साहब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, दोनों ये कहते आए हैं कि हमारी पहले उनसे कभी मुलाकात नहीं थी, रिसेंटली मुलाकात हुई, जबकि सिंथिया ने आज प्रोग्राम में बताया कि उनकी 2013 के बाद उनसे प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात हुई थी, जहां पे उनको मैन हैंडल किया था यूसुफ रज़ा गिलानी ने। हबीब अकरम साहब ने आज दुनिया टीवी पे अपने प्रोग्राम में इसकी तफसीलात बताई है कि चंद माह पहले जो मुलाकात हुई थी सिंथिया रिची और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान, उस मुलाकात से ये वाज़ेह लग रहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी उनसे पहले कभी नहीं मिले हैं। मैं इनके साथ साथ ही चल रहा था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ। अभी ये कुर्सी पे बैठने भी नहीं पाए थे, उस स्टेज से नीचे थे कि सिंथिया रिची अपनी कुर्सी से उठी, इनके साथ वो साहब भी उठे और इन्होंने आके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से हाथ मिलाया। अच्छा। अब जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से इन्होंने हाथ मिलाया तो गिलानी साहब का चेहरा, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं गिलानी साहब का चेहरा देख रहा था कि उसके ऊपर कोई शनासाई की रमक नहीं थी। अच्छा। एक क्वेश्चन मार्क था कि कौन है। हाँ। तो उस पे इन्होंने अपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि क्या आप अमेरिकन सफारत खाने में काम करती हैं या इंग्लिश सफारत खाने में या किसी और सफारत खाने में, यानी गोया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इन्हें नहीं जानते थे। हबीब अकरम बता रहे थे कि वो विटनेस थे इस मुलाकात के, और जैसी ये मुलाकात थी, जो सवाल गिलानी साहब ने उनसे पूछा तो उससे ये वाज़ेह होता है कि उनकी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई है। इसी तरह मखदूम शहाबुद्दीन के ऊपर भी जो इल्ज़ाम लगा है उसकी उन्होंने भी तरदीद की। उन्होंने कहा कि मैं उनको जानता ज़रूर था, लेकिन कभी ऐसी मैन हैंडलिंग का वाक़या नहीं हुआ। तो मेरा तो इनके साथ कोई इतना इंटरैक्शन नहीं है, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि मैंने उन्हें ज़दोख़ोफ़ किया, मैन हैंडलिंग की है, सरासर गलत है। मैं जब भी उनसे मेरी बातचीत हुई, अखलाक को मद्देनजर रखकर मैंने गुफ्तगू की उनके साथ जी, और मैंने एहतराम किया उनका। शहाबुद्दीन साहब भी इस इल्ज़ाम की तरदीद कर रहे हैं। रहमान मलिक के तर्जुमान ने कल इस बात की तरदीद की थी। रहमान मलिक का अपना कोई बयान या खुद उन्होंने टीवी पर आके इस बयान की अब तक तरदीद नहीं की है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।